Okay. Good morning. Bharat has joined, I guess, right? Yes, sir. Good morning, sir. I'm audible. Uh, Yes, you are. okay. How are you doing? All good. So let us wait for a few minutes to others to join. Yes, sir. Sir, I had a question from like previous session. Yeah. You do ask. Sir, on the first the class, you said that complex functions, we consider them as fields, right? Not complex function. Complex numbers are fields, right? Okay, complex numbers are this I got the definition like mathematically what fields are there they follow some rules so that we are saying them field. But physically also are they associated with fields or like it's just in like No, not simply that field. I mean, physically, field is a different thing, right? Yeah, you can say them field because see, like yesterday I was discussing a field. Field is something, a property which you can associate with coordinates in physics. Like for example, temperature field, scalar field, vector field. मतलब जैसे velocity field बोलते हो तो velocity field of a fluid means at every x comma y comma z you will have a certain magnitude as well as vector in that particular direction. That is a vector field. Okay, right, and sir. and in a what you can say in a temperature field, for example, so you for every particular x comma y comma z you can associate a temperature at that particular point. That is called as temperature field, isn't it? So probably the reason maybe here you have three tuples, all are real numbers, so r cube is also a r cube over r, for example. Here you are having all the entries from real numbers, so probably I can get your, I got your point. You are saying that uh, that field that I was talking was an algebraic structure. How do you relate that field with the physics kind of field? Is it? Right. If I'm not wrong. Okay. Um, Yes, sir. okay. So I will look into it and I will respond tomorrow. Okay. That would be fine. Yes, sir. Yes, Perfectly. sir. ठीक है. So the basically हम लोग जो field पढ़ रहे थे on the very first day, complex number forms a field. For that field, I would say that is a field, algebraic field. That is an algebraic structure. Okay. And for every x comma y comma z, if you can associate a number, then it is called as a scalar field. And if you can associate a vector as well as a number of magnitude, that is called as vector field in physics, in general, otherwise also. So I will have to Right. see whether this has some sort of a likeliness to or some sort of similarity with the uh, I think the field that I was talking. Uh, so that I have to look into, right? So I'll respond accordingly. Okay. So I hope many Okay. people might have joined. Let us start with where we left tomorrow, whether we left yesterday. So in yesterday's class, we were discussing analytic function, and we also derived Cauchy-Riemann conditions. The motivation behind deriving the Cauchy-Riemann condition was to say, was to ensure or was to make you understand that how powerful is this is the tool of path independence. You see, we only used one criteria, that was the path independence, nothing else. So if you are having path independence, we were able to derive the Cauchy-Riemann conditions. Okay, so understand the point. If function is differentiable, then Cauchy-Riemann conditions are met. So that is one thing. Converse doesn't hold good. Converse doesn't hold good means you can have the possibility that at a point your Cauchy-Riemann conditions are holding, but still at that particular point your function is non-differentiable. Okay, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था? Yes. I hope it is clear. Okay, now let us move to something called as analytic functions and so on and so forth. Okay, so yesterday we were discussing mostly differential function. The differentiability we were discussing yesterday. And after differentiability, I told you that just remember one thing. And I just told you, okay, if a function is so that, if I'll write here, so if a function is such that, if a function is such that, so let us discuss analytic functions. Analytic functions. So I would say a function of complex variable is said to be of a complex variable z. A complex variable z is said to be analytic. Is said to be analytic. Analytic at point z naught if it is single valued.
Okay, if it is single valued and differentiable in at all points, as लिख लो, at all points in the neighborhood of z equal to z naught. So in the neighborhood of z equal to z naught, if your function is differentiable, I will say your function is analytic. Okay. Okay. So mostly I would discuss in the entire physics side, I will discuss only analytic functions. Okay. So this is our thing. Okay. Now, yesterday we were saying that if your function is differentiable, then it implies that your Cauchy-Riemann conditions hold good. Yes or no? Yesterday we were having this kind of discussion where we were seeing that if your function is differentiable, then it implies that your Cauchy-Riemann conditions hold good. Okay. Okay. So what can be the additional what you can say? What can be an additional thing that would suggest that if Cauchy-Riemann conditions are holding good, does it imply your function is differentiable? Answer is no in general. So the converse of the above statement does not hold good. The converse of the above statement does not hold good. The converse of the above statement does not hold good. Okay. So what added additional conditions can be there so that your Cauchy-Riemann conditions, if they are holding, it can imply differentiability? So for that, you have to understand that your first order partial derivatives that I was writing should be continuous. So if I say my function is, so if I say point number one, if I say my function fz is differentiable at z equal to z naught, implies Cauchy-Riemann conditions. And if I have to say that Cauchy-Riemann condition holding, then I have to also say that my first order partial derivatives, that is with respect to u, with respect to v, with respect to u, with respect to x, with respect to v, and with respect to all these first order partial derivatives, they should be continuous. If these all, that is derivative, first order partial derivatives are continuous, first order partial derivatives are continuous, and Cauchy-Riemann conditions are holding good at a point z equal to z naught, then it necessarily implies your function is differentiable. Are you getting my point or not getting my point? So what extra conditions you must state in order to say that by having Cauchy-Riemann conditions holding true, your function is differentiable. So added condition would be that your first order partial derivatives, that is u, first order partial derivative of u with respect to x, u with respect to y, first order partial derivative of v with respect to x, and v with respect to y must be continuous. If they are continuous, then you can, and the Cauchy-Riemann conditions are holding good, then certainly your function is differentiable at point z equal to z naught. And if it is differentiable at z equal to z naught and in some neighborhood of z equal to z naught, then your function is said to be analytic in that particular point z equal to z naught. ये चीज समझ में आई कि ऊपर से चली गई है? Yes, sir. So हम लोग कल तक पढ़ रहे थे, उसके आगे का मैंने बताया कि अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू और डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड सारे के सारे कंटिन्यूअस है और कॉची-रीमान कंडीशंस अगर होल्ड कर जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, सो इन गिवन नेबरहुड फंक्शन वुड बी एनालिटिक. यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. सो ओवरऑल आई कैन राइट इट इन दिस फैशन. सो इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता है?
कि अगर फंक्शन को मेरे को एनालिटिक देखना है किसी नेबरहुड में तो पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए. सो अगर मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन एनालिटिक है तो व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी देयर. सो इट विल बी डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू z नॉट. मानते हो? f dash z must be defined in some neighborhood of z equal to z naught. मानते हो? So in some neighborhood of z equal to z naught, f dash z must exist. Cauchy-Riemann conditions must hold. और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? The first order partial derivatives are continuous. अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है, कॉची-रीमान कंडीशन होल्ड कर रही है, इसका मतलब z इक्वल टू z नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. एंड इफ इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू z नॉट अगर f dash z एग्जिस्ट कर गया, then it implies your function is analytic. Yes or no? अब incidentally Yes. there is a theorem in mathematics which suggests that if your first order partial derivatives are continuous, if your first order partial derivative are continuous, it implies that order of mixed partial derivatives will be order of mixed partial derivatives becomes immaterial. I would 2 मिनट में बताता हूँ क्या लिखा जा रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ. I will tell you. So for example, if I have a function v which happens to be function of x and y, there can be two mixed order partial derivatives, del square v del x del y, it can be there, and del square v del y del x. ये दोनों हो सकते हैं. मान लो आप पहले y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, then you can differentiate with respect to x, and you can differentiate with respect to x, and then you can differentiate with respect to y. Are they always equal? Are they always equal? So there is a sufficient condition in mathematics which suggests that if your first order partial derivative are continuous, that is, if del v upon del x and del v upon del y are continuous, then these mixed order partial derivative will be equal. In other words, I would say that whether I differentiate it with respect to y first and then x, or I differentiate with respect to x first and then y, hardly matters. Okay, so it implies that these will be equal. बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई कि नहीं? Are you getting my point? यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. कुछ समझ मतलब तुम समझ पा रहे हो? Why I am constructing this for the reason of harmonic functions. Okay. अब देखो, for example, if I am saying that if I am saying that my function is analytic at a point, that implies my function is differentiable at that point. मतलब वहां पर मेरी Cauchy-Riemann conditions hold कर जाएंगी. So if I am saying my function is analytic, it implies this will be the case. If I am saying my function is analytic, that is, it is having derivative at a point z equal to z naught, then Cauchy-Riemann conditions must hold good. Yes or no? Yes, dear. Okay, if at all this is the case, then एक एक्स्ट्रा कंडीशन अगर ऐड कर दूं क्या, कि अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, इफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, देन लेट अस डिफरेंशिएट इट with respect to x and let us differentiate it with respect to y. So one को differentiate करते with respect to x and y को differentiate, second को differentiate करते with respect to y. So what you will get? You will get this, and here you will get del square v del x del y, and here you will get minus del square v upon del y del x. Yes or no? And if the first order partial derivatives are continuous, I already told you that this the order of the mixed partial derivatives becomes immaterial. Whether I differentiate it first with respect to y and x, or with respect to x first and then y, it hardly matters. They become equal, so this will become equal to 0. So what you are seeing that your u happens to satisfy your Laplacian equation, isn't it? And similarly, you can see that your del square v satisfies Laplacian equation. So if your function is analytic in some neighborhood of z equal to z naught, such that the first order partial derivative are continuous, then your function u and function v are the functions which satisfy the Laplacian equation
functions which satisfies the Laplacian equations are also called as harmonic functions. Okay, so this has been asked 2 times, if I remember correctly, 2 times when I was active in teaching. So 2 times it has been asked in GATE examination. The same statement has been asked in GATE examination. Okay, the same statement has been asked in 2 times in physics in GATE examination. If function is analytic at a point z equal to z naught such that the first order partial derivative of u v are continuous, then u and v satisfy the Laplacian equation, or in other words, they are harmonic function. Okay, यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, एंड इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि if I can write it as कि अगर fz मेरा u plus iota v है and my u and v's have first order continuous partial derivatives, then u and v satisfy harmonic function. U and v are harmonic functions and they are said to be harmonic conjugate of each other. U and v are said to be harmonic conjugate of each other. ये बहुत छोटा सा फैक्ट था जो कल बताने से रह गया था. That is why I was telling you. Harmonic conjugate of each other. Yes or no? Yes, sir. Okay. बाकी सब कहाँ चले गए? एक भरत ही रह गया क्या जिंदगी में? दीक्षा समझ में आया बेटा? यस सर। अब समझ में आ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हम पढ़ते थे कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है, देखो ये देखो पढ़ा था शॉर्ट्स थ्योरम तुम्हारी भाषा में. क्या बोलते थे? शॉर्ट्स बोलते थे अपन लोग इसको. क्या बोलते थे? शॉर्ट्स थ्योरम बोलते थे या यंग्स थ्योरम? 3 थ्योरम बताया था ना क्लास में आपको. शॉर्ट्स थ्योरम, यंग्स थ्योरम, 3 थ्योरम, कॉशीज थ्योरम. याद करो मल्टीवेरिएट कैलकुलस में जो हम लोग ऑर्डर ऑफ यस सर। याद है? सो याद रखना, अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो ऑर्डर ऑफ मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स बिकम इमैटेरियल. मतलब ये फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दे आर इक्वल. और याद करो दीज वर सफिशिएंट कंडीशन, नॉट नेसेसरी. ओके, सो अंडरस्टैंड द पॉइंट. ठीक है गोपाल, समझ में आया बेटा? सो याद रखना, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है at z equal at in some neighborhood of z equal to z naught, then and first order partial derivative are continuous, then they are harmonic functions and they are said to be harmonic conjugate of each other. अब तुम सोचोगे यार इतना तो हमने कभी सोचा नहीं, हम तो सीधे ऐसे कर देते. yes तुम कर देते हो, that is absolutely fine, but the question itself take guard of everything. in examination it is asked in a manner कि वहां ये दे रखा होता है, तुम उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो कि ये सब कंटिन्यूस दे रखे होते हैं. एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज चक दिक्कत हो जाएगी. तुम देखोगे तुम्हारे जो मैक्सवेल लॉज डिफाइन होते हैं ना सारे थर्मोडायनेमिक्स में, वो इसको बहुत जल्दी इसको इसी को यूज किया जाता है. देखना इमटेरियल इस तरीके से लिखा जाता है कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स इमटेरियल, मैक्सवेल्स रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. तो क्योंकि हम फिजिक्स में ऐसे फंक्शंस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एटलीस्ट क्लासिकल फिजिक्स में, जो ज्यादातर कंटिन्यूअस टाइप के हैं, तो वहां हमारी लाइफ थोड़ी इजी रहती है. बट फॉर मैथमेटिशियंस लाइफ इज नेवर इजी. सो दैट इज व्हाई. Okay, so let us do a question over it and move forward. Okay, so for example, if I give you this particular question, let's say if I give you a question that if u is given to be 2x 1 minus y is harmonic, find its harmonic conjugate v. Find its harmonic conjugate b. ओके, तो सबसे पहले एक बार देखें कि हार्मोनिक फंक्शन है भी कि नहीं. तो हार्मोनिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं बेटा? विच सैटिस्फाई योर लैप्लेसियन इक्वेशन. तो सबसे पहले इसको 1 विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें. सो विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा? 2 1 माइनस y. सेकेंड टाइम वापस डिफरेंशिएट करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा? यस और नो? कोई यस और नो तो बोल दो यार. Yes, sir. और विद रेस्पेक्ट टू y भी करोगे तो कुछ सोचो क्या आएगा. एक बार डेरिवेटिव करोगे तो -2x आएगा, और -2x का विद रेस्पेक्ट टू y फिर डेरिवेटिव करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा. इट इंप्लाइज डेल स्क्वायर ये दिस विल बी इक्वल टू 0. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 0 ही तो आना. इसका मतलब u इज अ हार्मोनिक फंक्शन इंडीड. कोई दिक्कत? यस और नो? अब इन ऑर्डर टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमें पता है कि अगर कॉशी रीमन कंडीशंस होल्ड करती हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल u अपॉन डेल x इसके बराबर हो जाता है डेल v अपॉन डेल y. हाँ या ना? What does it imply? It implies I can write that del v upon del y is equals to 2 times x 1 minus y. Yes or no? And if I try to differentiate it, understand that this particular this is a partial derivative. That is,
here only y is a variable. And when I mean all other things are constant, I would also mean that x is a constant. Okay, so when I'm differentiating with respect to y, or partial differentiating with respect to y, I am treating x as a constant. So mostly I have to when I have to integrate it, I can only integrate it with respect to y, keeping x constant. Yes or no? Right. Okay. So del u upon del x, oh sorry, del u upon del x यहाँ लिखना पड़ेगा. Del u upon del x पहले निकाल लेते हैं. Del u upon del x कितना होगा? 2 times 1 minus y. So my bad. This is I think this thing. Okay. I hope it is clear. So what will be v? Will be equals to 2 times 1 minus y integral with respect to this. So you will get v is equal to 2 times y minus y square plus some constant which may be a function of x, which may be a function of x. I'm not sure, but which may be a function of x. Why? Because when you are differentiating, when you are integrating with respect to y, you are keeping x as a constant. Yes or no? So whatever happens to be a constant, it may be a function of x also. Because when you are integrating with respect to y, you are keeping x as a constant. Yes or no? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ डेरिवेटिव किस रेस्पेक्ट में क्या है? y के रेस्पेक्ट में तो क्या है? तो इंटीग्रेट भी तो विद रेस्पेक्ट टू y करोगे. जब इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो यू विल कीप x एज अ कांस्टेंट. सो यहाँ मैं c नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मे बी अ फंक्शन ऑफ x, और अगर कांस्टेंट भी तो क्या फर्क पड़ रहा है इन जनरल gx. यस और नो? Yes, sir. ये चीज समझ में आती. अब चलो डेल v अपॉन डेल x इसके बराबर होगा. दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल u ओवर डेल y. और del u over del y कितना होगा पहले चेक करें. So del u over del y will be equals to minus 2x, I guess, if I'm not wrong. So this will be equals to, I think del v upon del x will be equals to what? Twice x. Yes or no? I hope it is clear. So if I differentiate with respect to x, if I differentiate with respect to x, I'll get x square plus some function of y. तो v के दो एक्सप्रेशंस आए. v या तो ये हो सकता है या v ये हो सकता है. इसका मतलब क्या होता है? जब भी कभी आप इंटीग्रेट करते हो ना, पार्शियली इंटीग्रेशन करते हो, इस तरीके से लिखा जाता है. तो अब देखो, फंक्शन ऑफ y हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये रहा फंक्शन ऑफ y. क्या फंक्शन ऑफ x हो सकता है? हाँ ये रहा फंक्शन ऑफ x. तो फिर हम लोग इसको एक साथ लिख देते हैं. खत्म. सो vxy वुड बी इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2y. खत्म. यहां हम जब इंटीग्रेट कर रहे थे, हम कह रहे थे कुछ कांस्टेंट हो सकता है विच मे बी अ फंक्शन ऑफ x. ये मिल गया हमको, देखो x स्क्वायर. जब हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे थे, हम कह रहे थे हाँ कुछ फंक्शन ऑफ y हो सकता है. ये मिल गया हमको. So we write it in a combined fashion, and v as a function of xy comes out to be x square minus y square plus 2y. Okay, so this happens to be the harmonic conjugate of this particular function. Yes or no? समझ में आई मेरी बात? इस तरह के questions you usually will find in examination are coming, at least in physics side they are coming every year. So I hope this you will do on your own self. I've told you all these things, but try to do as many as problem as possible. Otherwise, you will not be able to get anything. अभी इनिशियल डेज हैं. प्लीज कीप द रेस्पॉन्सिवनेस. अगर अभी रेस्पॉन्सिवनेस खत्म कर दी, समझना आगे नहीं समझ में आएगा. इवन इफ आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, वट एवर आई कैन ट्राई ओनली दीज थिंग्स. I cannot solve the questions on your behalf. Okay, I can solve difficult questions on your behalf, but I cannot solve routine business question on your behalf, because routine business questions are already given in the exercises or probably in the books. You can go through all those books, examples, and you will be able to get it. I'm very sure you will be able to get it. The only thing that is keeping you away from clearing the examination is practice. So kindly do practice. Otherwise, the problem is that you will know everything, but you will not be fluent enough to do those things in examination. So, so this is my request. If you try to do these questions, you'll be able to get to the examination. I hope यहाँ तक किसी को भी कोई doubt तो नहीं होगा. है तो please पूछ लो. You can ask question if you want to. Please do ask. अगर कोई question बच रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि you are not getting it. दीक्षा बेटा आ रहा है समझ में? Yes, sir. Okay. So अच्छा, तो तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ ना क्वेश्चन सीधा से. खत्म कर. So let me ask some question from you. अगर वो तुम कर पाते हो तो I'll be more than happy. Okay, so give me, just tell me, somebody's entered the room. So question is, let me give you a question. Okay, tell me whether the given function is analytic.
I'm writing in finite complex plane, not infinite complex plane. Okay, infinite complex plane. By finite complex plane, I mean I'm not including infinity right now. In finite complex plane, I'm not. Okay. So let me give you an example. fxy is equals to, let's say, e raised to power x into cos y minus iota sin. Try to do this. Just try to do this. Should I do it? So let me try this. So इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? I think everybody should be aware. मैं एक काम करूंगा. One day I'll take a class revision to complex numbers because probably many of you might have forgotten. That is why I'm doing it. So e की power iota theta happens to be cos theta plus iota sin theta. ये चीज याद है सब बच्चों को? This is Euler's notation or exponential representation of complex numbers. Okay, मैं एक क्लास नहीं लूंगा because I feel अगर नहीं याद है तो everybody is familiar with this. Yes, भैया. Yes, भैया. Okay. Yes. So I can write e की power minus iota y is equal to cos y minus iota sin y. मानते हो हाँ या ना? This entire expression I can write in this fashion. Yes or no? So fxy Yes, भैया. happens to be e की power x into e की power minus iota y. So ultimately क्या होगा? E की power x minus iota y and e की power x minus iota y. If z is my x comma y, can I not write z conjugate as x comma minus y? So whatever he is written is conjugate. So याद करो मैंने कल ही बताया था, if at all your function depends on z bar, it is non-analytic. याद है कल बताया था क्लास में? Last discussion मैंने कहा था, if I have to write the Cauchy-Riemann conditions in very compact form, I have to write it in this fashion. ये हमने derive भी किया था, याद करो. So if your function depends on z bar, it cannot be said as analytic. So the function wholly should be a function of z or something like powers of z, but it cannot depend on z bar. If at all it depends on z bar, then it's not going to be. Okay. Okay. So let us do another question. If you will be able to do, then let's see. Okay. Let us do this particular question. I think. एक मिनट मुझे दो. Yes. I'm trying my level best to innovate these on kind of novelities in order to use pens and everything. So I'm still not able to figure out where the eraser is, but somehow I'll do it. So e की power fxy, let me recollect the question. So if I write in this fashion, what are your thoughts over it? Just try to tell me what are your thoughts over it. Okay. And Bharat has left. Bharat has given us some problems. Everybody think Bharat was asking in the morning itself that you told me that complex number formed a field structure. Okay, okay, and he wants to say he in physics we are often confronted upon by these terms like scalar field, like vector fields. So he wants to say whether all these fields are the field in the definition of what we are seeing here. That is, this definition was algebraic. So in algebraic structure sense, I was using the word field. He wants to ask me, and probably I want to throw this question to all of you, that the scalar field and vector field, this field, does it actually have all those algebraic properties, or has it got something else to do? So whatever I know, field is something where you can associate a field are those properties to which you can associate a coordinate in some space. So for example, I say temperature field, I mean that for all x comma y comma z, temperature would be dependent on this. So his question is this. I hope everybody has got it. Try to find an answer to this. I will also try to find an answer to this, and we'll get back to it tomorrow. So again, coming back to the problem. Okay. So why do I want all these things? Because see, we are all learned people, like learned as in we have all done MSc. ठीक है? तो अभी हम सब almost एक equal footing पे हैं. So why not start interacting and doing things in common? So this is what is my suggestion, or probably my only motivation to start all these things. Okay. So tell me what can be said about this. So let me initiate this problem. Analytic होगा भैया ये. Analytic होगा. कैसे होगा analytic?
e टू द पावर माइनस जेड बन रहा है ये मेरा। e की पावर माइनस जेड, गुड। सो बेसिकली ये सबको आ गया होगा आई गेस, नहीं आया तो मैं करके बताऊं। एफ जेड कितना आएगा, e की पावर माइनस जेड आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये माइनस एक्स है और ये आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा है। अभी के लिए समझो एक्सपोनेंशियल अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं तुम्हें वैसे समझाता हूँ, यहां तक क्लियर है। या फिर ऐसे समझो, अगर मुझे इसका u बताना हो तो u क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। v क्या आ जाएगा, सोचो e की पावर माइनस एक्स साइन वाई, मानते हो? इनके डेरिवेटिव्स भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि मैं तुम्हें थोड़ा लंबा समझा रहा हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है एक्सपोनेंशियल, तो मैं कैसे बोलूँ। ठीक है, कॉस वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, सोचे डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक सॉरी एक नेगेटिव आएगा, राइट, ये माइनस है ना यहाँ पे, देखो। सो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड del u upon del y also, and you can find del v upon del x. I don't think इसमें कोई दिक्कत होगी। You can see that your Cauchy-Riemann conditions are holding good. But does it necessarily mean कि your function is differentiable? मैंने बताया था सुबह पे, ये एक तो ठीक है, e की पावर माइनस जेड हो गया, e की पावर z इन जनरल अभी आगे पढ़ेंगे इज एन एंटायर फंक्शन, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एंटायर फंक्शन है तो एनालिटिक होगा। सो ये तो ये चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अगर नहीं पता होता एग्जाम में तो क्या करते, एक बार u भी निकाला, डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, डेल यू अपॉन डेल वाई किया, डेल यू अपॉन डेल वाई किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, कॉशी-रीमान कंडीशंस तो होल्ड कर गई। अब मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, डज इट नेसेसरीली इंप्लाई कि इफ कॉशी-रीमान कंडीशंस आर होल्डिंग गुड, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल? आंसर इज नो। मैंने अभी पहले पहले एग्जांपल भी दिया था तुमको, कॉशी-रीमान कंडीशंस होल्ड करने का फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैंने सुबह सुबह तुम्हें क्या सिखाया, मुझे भी बताओ एक्स्ट्रा एडेड कंडीशंस क्या चाहिए, क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ हाँ, ये कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि तो e की पावर माइनस एक्स कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस। कॉस वाई कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस। प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। e की पावर माइनस एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। कॉस वाई कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस। इसका मतलब कॉशी-रीमान कंडीशंस भी होल्ड कर रही है, ux, uy, uz, sorry, uy, ux, vx and vy all are continuous as well. So if these are continuous, Cauchy-Riemann conditions are holding good. That implies it is differentiable at any arbitrary point. यहाँ पे in fact कोई point बताया नहीं, तो any arbitrary point x comma y, it implies this is analytic. Other way of putting things around is you just try to convert it into z. It wholly depends on z. Also, that e की power z is an entire function, which I'll tell you in the next class. So this is a analytic function. Are you getting my point? Yes, भैया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको सब चीज समझ में आ गई। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत है। अगर है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में यही स्टार्ट करने वाले हैं, एनालिटिक फंक्शंस। भैया ये जो CR इक्वेशंस तो हो गई होल्ड्स, उसके हाँ बाद जो आपने करवाया वो एक बार रिपीट करना। ये हाँ UX हाँ, UY क्या देखो किया था? डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है बेटा, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। कॉस वाई हम्म। कंटिन्यूस फंक्शन होता है, देखो ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये कॉस वाई दिख रहा है, ये टिक 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 टिक, ये ठीक कॉस है। वाई कंटिन्यूस फंक्शन है। e की पावर हम्म। माइनस एक्स कैसा होता है, देखो मैं बता ही देता हूँ, e की पावर माइनस एक्स कैसा होता है, ये एक्सपोनेंशियली। हम्म। e की पावर माइनस एक्स भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। हम्म। In algebra of continuous functions, ओके, we प्रोडक्ट भी say that a कंटिन्यूअस होगा। product of two continuous function is again a continuous function. So this is a हम्म। continuous function. This is a continuous function implies what? Del u upon del x is continuous. E की पावर माइनस एक्स हम्म। into cos y continuous. It implies del u upon del v upon del y is continuous. Similarly, you can find that del u upon del y and del v upon del x are continuous. तो याद करो, मैंने सुबह सबसे पहले बोला है, सिर्फ कॉशी-रीमान कंडीशंस होल्ड करने का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होता। यू हैव टू हैव सम नहीं एडेड होगा। कंडीशन। एडेड कंडीशन ये है कि ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए। कौन? ये ठीक सारे है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तब तुम UX कह UY। पाओगे कि एनालिटिक। हाँ, नो डाउट यू हैव डन दिस, सो दिस विल बी अ गुड अप्रोच इन एग्जाम्पल्स। नो इश्यूज। आई होप इट इज ओके। क्लियर टू एवरीवन। सर एक सारे कंटिन्यूस होने चाहिए, एक भी कंटिन्यूस ना ना नहीं ना ना, होगा तो सारे फिर कंटिन्यूस, सारे कंटिन्यूस नहीं होंगे तो ये देखो अभी भी ऊपर ऊपर अपन ने लैप्लेसियन इक्वेशन कैसे लाएंगे? सारे कंटिन्यूस होने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? del u ओके upon सर। del x, del v upon del y, del v upon del x and del v upon del y, they all must be continuous. और अगर ये सारे ओके सर। कंटिन्यूस हैं तो फिर u और v हार्मोनिक फंक्शंस बन जाते हैं, देखो, क्योंकि ये लैप्लेसियन इक्वेशन को होल्ड करते हैं।
और तुम लोग मैथमेटिक्स में याद रखो, तुम लोग आगे हार्मोनिक एनालिसिस पढ़ोगे, पूरा एक सब्जेक्ट है ये. So understand my point. So this is it. Okay, this is it. So I think this is more than enough for the class. I'll join in the next class also, but I want to tell you one thing. Please, please, please try to do all the previous year question. अभी से load कम है, बाद में एक साथ compile हो जाएगा load, and then you will not be able to do it. So I would share, I would request somebody to share all those questions which we have stated कि एक particular source हमको लेने हैं, and then we have to डेली बेसिस पे चाहे 5-5 क्वेश्चन करो, 6-6 करो, यू विल बी कनेक्टेड. अदरवाइज ये फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट बैक टू एनीथिंग. देखो, ऑनलाइन टीचिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, यू विल फाइंड दैट यू माइट हैव एनरोल्ड टू मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देन द पुअर, उनकी कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती है. यू विल एंड अप हैविंग 400 आवर्स ऑफ क्लासेस अनरिकॉर्डेड एंड यू हार्डली हैव 200 आवर्स इन ऑर्डर टू लिव द एंटायर लाइफ. लाइक 6 महीने होंगे टोटल, जिंदगी के 8 घंटे के आउटपुट में तुम मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें पता लगेगा हमारे पास 180 घंटे हैं, और पता चलेगा 400 घंटे से ऊपर के लेक्चर पढ़े हो. अब वो समझ नहीं आएंगे फिर बाद में. So only beauty of regular live class, or probably this exercise is to please try to do all these questions जो से relevant है. इतने बड़े हो गए हो, you can understand all those things, कहाँ से common questions मिल रहे हैं, उसको please daily basis पे करो. Otherwise this entire activity will be futile. Okay, so this is my request. Okay, so in next class we are going with the elementary functions. Okay, so till then if anybody does not have any question, I will switch this off. Okay.